talks about the total cost, right? So what it says, a cost sheet is a document, it is a financial document that provides a detailed breakdown of all the cost which is involved in producing a commodity or rendering a service. So what it is talking about, this cost sheet, it depicts the breakdown of all the cost. So you have, whatever you have studied till now in marginal costing or in budgetary or in standard costing. So here, this cost sheet, it will break each component of the cost. Like in the sense, there are direct cost, there are indirect cost, right? So the direct cost, what are all the direct costs? Something like direct material is there, direct labor is there, direct expenses are there. Then we have indirect cost. Now when we talk about indirect cost, we talk about the cost which is incurred in the office, right? Like for example, office expenses are there, administrative expenses are there, then you have selling and distribution expenses are there, general expenses are there. All these are indirect cost. Understood? So majorly the cost here is categorized into two. One is direct, another is indirect. Is it okay? So but this cost sheet, it is a document which depicts the breakdown of all the cost which is incurred in producing a commodity or rendering a particular service. Is it okay? Now, this is basically used by businesses to analyze the cost structure of their operations. It also determines the total cost of production, cost of goods sold, cost of sales, and also calculate the profitability of their product and services. Is it okay? Clear? What it says? ये cost sheet जो है normally business houses use करते हैं to find out the cost structure of their operation. हमारा cost structure कैसा है? हमारे direct expenses ज़्यादा हैं या indirect expenses ज़्यादा हैं? One thing. Another thing, they calculate various types of cost, like prime cost क्या होती है, right? Cost of production क्या होता है? Cost of goods sold क्या होता है? Cost of sales क्या होता है? And finally, it helps the companies to calculate the profits for their operations. Is it okay? That is what the cost sheet is all about. Now this cost sheet is very, very important in and helping the business houses to take various important decisions, right? It also helps them in controlling the cost and also help them in improving the overall efficiency of the organization. So this is just a brief about what the cost sheet is all. Is it okay? Right? Normally ये topic आपको cost sheet as such cost sheet नहीं मिलेगा. इसका topic का नाम होता है single and output costing. This comes under single and output costing. Is it okay? Right? There is a topic, there is a subject, there is a chapter in your notebook by the name single and output costing. In that, right, you will come across cost sheet. Right? Now, let us understand the importance of cost sheet. Why cost sheet is important to any of the business houses or corporations or companies? One, it helps the company in analyzing the cost. So companies can do the cost analysis with the help of cost sheet, right? So cost sheet, it provides the detailed breakdown of all the cost. You remember, cost sheet का मतलब क्या है? हर component of the cost is shown. So it breaks all the cost. Total cost को total variable cost, total fixed cost, फिर total variable को break किया, direct कितना है, indirect कितना है, fixed को break किया, direct कितना है, indirect कितना है. उसके बाद ये break किया कि fine, factory cost कौन सी और office cost कौन सी है. फिर office के अंदर break down किया कि इसमें office and administration कौन सा है, selling and distribution कौन सा है. So it is breaking down every component of the cost, right? So cost sheet, it provides a detailed breakdown of all the costs which is involved, which is incurred in producing a commodity and rendering the service. Number one. Number two, this analysis, it helps the business in understanding the cost structure and the major components of the cost, right?
Third, by knowing the individual components of the cost, business houses or the companies, they can focus on cost reduction strategies, right? And also they can negotiate better with the suppliers and improve the overall efficiency of the company. This is the benefit of cost sheet. Clear? पहला क्या होता है, हमारी cost reduction strategies हमारी बन जाती हैं, cost sheet बनाएंगे, we will learn how to make a cost sheet. The moment you see a cost sheet, आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे कहाँ पे expenses ज़्यादा है, जहाँ पे भी हमारे expenses ज़्यादा होंगे, what we are going to do that, we are going to control those costs. जब हम cost को control कर लेंगे, करेंगे, तो हमारी जो efficiency है वो automatically क्या हो जाएगी, better हो जाएगी. Is it okay? That is the first importance of cost sheet. The second importance of cost sheet is pricing decision. Cost sheet helps the business houses or the companies in fixing up the price for their commodity and service. Clear? Right? So cost sheets are crucial for setting appropriate prices for product or services, number one, and it also helps in calculating the total cost per unit. Total cost per unit, and businesses what they can do, they can add the profit margin in that to calculate the total sales of the company, total selling price of the company for the product and service. Is it okay? Third, profitability assessment. Profitability assessment. Now what it says that cost sheet, it helps the businesses to evaluate the profit of each of their product and services. One. Number two, it also compares the selling price of the total cost with the total cost per unit, and companies can identify which all products are the high profit products, which all products are the low profit products. Is it okay? So they can have a cost reduction strategy on those which has low cost profit products, which are low cost profit products. Next, this information, it helps the businesses to concentrate on various resources so that they can maximize their profit, or they can discontinue those products or services which are not profit making. Is it okay? Third, next importance of cost sheet is budgeting and financial planning. Let me tell you why I am talking about it, because you may get either there will be two things, या तो आपको cost sheet बनाने को आएगा या आपको cost sheet से related कोई theoretical question आएगा. So you need to know about theory as well as the practical. Now, cost sheet helps in preparing budget as well as in financial planning. Now, जब हम cost sheet बनाते हैं, तो cost sheet हमको बहुत सारा data देता है. वो data cost से related होता है. अब जो cost से related होता है, कहाँ पे हमारी कौन सा हमारा direct cost है, कौन सा हमारा indirect cost है, कहाँ पे हमारा क्या variable cost ज़्यादा है या fixed cost ज़्यादा, we came to know about the cost of each component. So कंपनी क्या करेगा, कंपनी उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स पे काम करेगा. वन. नंबर टू, उसके बाद वो जब वो डाटा कलेक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद वो बजटिंग करेगा और फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा. बजटिंग मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इज इट ओके? सो दिस हेल्प बिजनेस टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एंड हेल्प्स इन डिटरमिनिंग कितना कैपिटल चाहिए, कितना फंड चाहिए, क्या हमारा रेवेन्यू होगा, कहाँ हमारे एक्सपेंसेस होंगे और कितना हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा. सो कॉस्ट शीट हमको प्रोजेक्शंस में भी हेल्प करता है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस में हेल्प करता है कि आने वाले समय में हमारी कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा हो सकती है और कहाँ पे कम हो सकती है. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. कॉस्ट शीट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज, right, of the departments, of the various divisions. And the most important thing कि हम यहाँ पे cost sheet जब बनाते हैं तब हमें डेटा जो मिलता है उस डेटा को हम अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द वेरियस वेरिएंसेस जो हमने पढ़े हैं. वेरिएंस एनालिसिस पढ़ा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में. सो दिस कॉस्ट शीट इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट. नेक्स्ट, लास्ट, कॉस्ट कंट्रोल. दिस इज इंपॉर्टेंट. कॉस्ट शीट देखिए अकाउंटिंग में क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट करता है. दो चीजें हैं, कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो या तो वो सेल्स करे, माल बेचे,
रेवेन्यू जनरेट करे, दूसरा होता है कॉस्ट कंट्रोल करे। अगर आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते, अगर रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, या तो वॉल्यूम बढ़ाओ या सेलिंग प्राइस बढ़ाओ। वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा पा रहे, सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो कॉम्पिटिटर के you will lose your business, right? Because your competitors may be offering a better price than you, right? तो क्या करोगे फिर? आपके हाथ में क्या है? Cost control. So you have to have a cost reduction strategies. Analyze your department, divisions, analyze every transaction which is happening in the organization, and then take a measure कि ये particular area में हमारा cost ज़्यादा आ रहा है, we have to reduce our cost. Are you getting my point? मान लो रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारी बहुत एक्सपेंसिव है। रॉ मटेरियल मेजर कंपोनेंट होता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो कंपनी क्या करेगी? अगर मैं केवल एक ही वेंडर पे डिपेंड करूँगा, एक ही सप्लायर पे डिपेंड करूँगा, तो दैट सप्लायर और वेंडर वुड बी चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट प्राइस फ्रॉम मी। तो मैं क्या करता हूँ? मैं टेंडर फ्लोट करूँगा। टेंडर फ्लोट करा तो क्या करा? वो वेरियस वेंडर्स एंड सप्लायर्स उन्होंने बिड करा। बिड करने से क्या हुआ? जो प्राइस मेरे को एक वेंडर पहले दे रहा था, बिड करने से और टेंडर फ्लोट करने से वो प्राइस मेरा स्लैश कर गया, राइट? तो जो प्राइस मेरे को 10 रुपये पर यूनिट मिल रहा था, आज वो हो सकता है मुझे 7.25 पर यूनिट मिल रहा हो, 8.25 पर यूनिट मिल रहा हो। सो बिकॉज ऑफ दिस माई कॉस्ट हैज़ गॉन डाउन, राइट? सो कॉस्ट शीट जो है वो कॉस्ट कंट्रोल में बहुत बेनिफिट होता है। इसीलिए ये सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था कायदे में। ये दिस इज दी first thing which is to be taught to you guys, but I thought to just to develop an interest, तो मैं इसको बाद में पढ़ा रहा हूँ। But understand one thing, whatever you have studied, right? बजट बनाना, कैश बजट बनाना, अदर बजट्स बनाना, वेरिएंसेस कैलकुलेट करना, मार्जिनल कॉस्टिंग करना, you have all learned all this. तो कॉस्ट शीट is not very tough. Is not very tough. बिल्कुल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह के एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। उस फॉर्मेट में आपको फिगर्स लिखनी है, एंड फाइनली यू विल गेट अ प्रॉफिट और लॉस वट एवर इट इज, एंड यू विल ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट। या आवाज नहीं आ रही है? नो, इट इज ओके। हेलो 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 हेलो, इट इज ओके नाउ? पहले बताना चाहिए था, तभी मैं कहूँ कि मेरी आवाज़, गला क्यों आज इतना बैठ रहा है, राइट? क्योंकि मेरे को खुद की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। ओके, सो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट शीट, इट अंडरस्टैंड द कॉस्ट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स थ्रू कॉस्ट शीट, एंड इट हेल्प्स द बिजनेसेस टू implement cost control measures in their organization. And by monitoring the costs very closely, the business houses, they can prevent overspending, right? They can avoid the cost overruns and also maintain a competitive edge in the market. ये बहुत important है। आप कॉस्ट शीट जो है किसी भी बिजनेस हाउस को, किसी भी कंपनी को हेल्प करता है उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने में, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने में, उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करने में, राइट? सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस एरिया में हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है उसको कॉस्ट शीट जो है हाईलाइट करता है और कंपनी को ये बोलता है कि आप यहाँ ओवर स्पेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रॉ मटेरियल का, अगर मेरा इफ़ माई रॉ मटेरियल कॉस्ट इज़ हाई, तो मैं क्या करूँगा? आई विल, रादर देन ओनली डिपेंडिंग ऑन वन वेंडर और सप्लायर, आई विल लुक फॉर वेरियस अदर सप्लायर्स एंड वेंडर्स इन द मार्केट, राइट? इट्स ओके, वेंडर इन द मार्केट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क द कोटेशन फ्रॉम देम। जब मैं उनसे कोटेशन मंगवाऊंगा, राइट, सो क्या होगा? देन आई विल सिट अक्रॉस एंड टॉक टू देम एंड नेगोशिएट ऑन द प्राइस। जब मैं नेगोशिएट करूंगा तो जो एक वेंडर और सप्लायर मुझसे पहले ज़्यादा चार्ज करता था, अगर उसे मुझसे बिजनेस चाहिए, राइट, सो वो अपने प्राइसेस को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, स्लैश करेगा। और रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर स्लैश कर गए तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, राइट, ऑफ प्रोडक्ट, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है।
और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है. इज इट ओके? सो दिस कॉस्ट शीट इट हेल्प्स द कंपनी इन हाईलाइटिंग दोज एरियाज वेयर द कंपनी स्पेंडिंग मोर. इज इट ओके? मान लो कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल या पावर का बिल बहुत ज़्यादा आता है, and a company is seeing that everyone they are using lot of जो भी जाता है वो वहाँ पे अपना फैन लाइट ऑन करके जाता है, एंड नो वन इज़ बॉदरिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल. क्लियर? इवन कंपनी के अंदर जो कन्वेंस है, जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, जो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस हैं, दे आर ऑल्सो ऑन अ हायर साइड, राइट? सेल्स इतना हो नहीं रहा, सेल्स टीम इतना टारगेट अचीव कर नहीं रही, बट उनके जो खर्चे हैं वो एज इट इज़ एग्जॉर्बिटेंट है. तो कंपनी क्या करेगी? दे विल स्क्रू इट, दे विल टाइटन द सेल्स टीम, और उनको क्या बोलेगी, भाई जब आप सेल्स इतना नहीं कर रहे तो आपके बिल्स जो है हम अप्रूव नहीं करेंगे अगर आप अपना टारगेट अचीव नहीं करोगे तो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज़ द रीज़न दैट दिस कॉस्ट शीट it highlights or it tells the company that these are the areas where you're spending more, right? And also it also tells कि जहाँ पे आपका कॉस्ट ओवररन हो जाता है. ओवररन का मतलब होता है आपको कोई काम करना था एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में और उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट होनी थी, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो आपकी जो कॉस्ट है वो ओवररन हो जाती है, राइट? तो वो चीज़ क्या हो जाती है? आपकी एक्सपेंसिव हो जाती है. नॉर्मली इफ़ यू सी इधर इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, अगर रियल एस्टेट के अंदर आपको कोई प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा था या आपको आपका घर 2 साल में 3 साल में मिलना था और वो 5 साल में मिलता है, तो एक तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली जो रियल एस्टेट है उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है. अब रियल एस्टेट वाला तो आपसे ले गई, वो तो अब देर आर रूल्स रेगुलेशंस कि अगर आपका डिले होता है तो 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दे यूज टू पे यू द पेनल्टी, द होल्डर ऑफ द लैंड, द होम ओनर्स, हाउस ओनर्स. बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले देवर नो रूल्स रेगुलेशंस, राइट? सो आपको कॉस्ट ओवररन कहाँ हो रहा है वो भी पता लगता है. एंड द लास्ट इज you have a competitive edge. What happened? पीछे सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लियर हो गया? हो गया? गुड. इसको भी क्लियर कर लेना. नहीं, मेरे हाथ में कहाँ है सर पेपर? मैं आपका थोड़ा लिखूंगा. मैंने तो, अब मुझे पता नहीं ना कितनों को पास किया कितनों को फेल किया इन्होंने. पता नहीं सर. अरे ये तो ऑनलाइन चल रहा है. ऑलराइट, फाइन. इज इट ओके? हेलो हेलो हेलो, या यस. माइक को पीछे करूं? अभी ठीक है? दिस इज ओके? दिस इज ओके? ओके, ये ओके नहीं है, ठीक है. ऑलराइट. ऐसा लग रहा है आई एम टेकिंग अ लड्डू इन माई हैंड, राइट? बिकॉज आप सबका रिजल्ट आ गया एंड ऑल ऑफ यू हैव गिवन मी अ लड्डू टू ईट, राइट? ओके. नहीं 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 सर, ये तो प्रैक्टिस के लिए हैं, तो एमसीक्यूज हैं. हाँ हाँ, मुझे नहीं पता. ऑलराइट, फाइन. लेट्स डू सम एमसीक्यूज टुडे. अभी जितना मैंने समझाया, आई नो इट इज़ नॉट ईजी टू एकदम से मैंने एमसीक्यू दे दिया, बट लेट अस अंडरस्टैंड हाउ मच यू हैव लर्न. द फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कॉस्ट शीट इन बिजनेस. कॉस्ट शीट का बिजनेस में क्या पर्पस है? पहला, to track employee attendance, to analyze the cost structure of operations, to calculate revenue generated, or to manage inventory levels. Answer is B. That is to analyze the cost structure of operations. So that is the answer. For question number 1, the answer is B. Now second question is, which of the following is not a cost component typically included in a cost sheet? वो कौन सा component है जो cost sheet में include normally नहीं होता है? Raw material cost, direct labor cost, selling price
or overhead expenses? Selling price is not a cost, right? So the option is 3. Now let's move down to the question number 3. Now, how is the total cost per unit calculated in a cost sheet? Cost sheet के अंदर cost per unit हम कैसे calculate करते हैं? Adding selling price and profit margin, 1. Multiplying the quantity by the rate of raw material only, 2. Summing up of all the cost components, 3. And deducting overhead expenses from the total production cost. The answer is? Anyone who has a different answer, please. Hello? Anyone who has a different answer? Anyone who has a different answer? Hello? Yeah. So answer is C. It is the summing up of all the cost components. थर्ड क्वेश्चन में आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है. समिंग अप ऑफ ऑल द कॉस्ट कंपोनेंट, सारे कॉस्ट कंपोनेंट को आप ऐड कर दीजिए. हाँ, इसी में है. मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी बाय द रेट ऑफ रॉ मटेरियल. केवल रेट ऑफ रॉ मटेरियल को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगी, कॉस्ट पर यूनिट नहीं आएगी. सर पॉइंट है कि मैं आपको कह रहा हूँ ये जो कॉस्ट है कॉस्ट पर यूनिट ही है. अगर आप सारी कॉस्ट पर यूनिट को ऐड कर दोगे, सारे कंपोनेंट की कॉस्ट पर यूनिट को ऐड कर दोगे तो आपकी क्या आएगी? टोटल कॉस्ट पर यूनिट आएगी. इसमें ऑप्शन आपको वो नहीं दिया है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड. अगर वो देता तो वो आंसर होता, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है कि आप सारे कॉस्ट कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके? नेक्स्ट, फोर्थ वन. Why are cost sheets important for pricing decisions? Cost sheet pricing decision के लिए important क्यों है? 1. They help businesses estimate the budget for the next year. They provide insights into the competitors' pricing strategies. They enable businesses to set appropriate selling prices based on cost data, or they facilitate cost-cutting initiatives. See? So they enable businesses to set appropriate selling price based on cost data. Let's see the answer. And the answer is C, because it enables businesses to set appropriate selling price, which is based on cost data, right? Next. What does variance analysis is in a cost sheet help identify? Variance analysis cost sheet में क्या identify करता है? Discrepancies between actual and budgeted cost, the profitability of the business, total sales revenue for the year, and the total value of fixed assets. And the answer is A. Variance analysis cost sheet के अंदर identify करता है the discrepancy between the actual cost and the budgeted cost or standard cost. Right? So the answer is A. Question number 6. How can cost sheet assist in decision making? Right? Cost sheet decision making में कैसे help करता है businesses की? And the options are by providing recipes for product manufacturing. By option 2 is by indicating the number of employees needed. Number C is by offering insights into the cost structure and the profitability of products. And option D is by suggesting marketing strategies. How cost sheet helps in decision making? Okay, let us see the answer. And the answer is option C, that is by offering insights into the cost structure and profitability of the products and services. Which aspect
Question number 7. Which aspect of a business performance can be evaluated using cost sheet? Business performance का कौन सा aspect हम evaluate कर सकते हैं cost sheet के द्वारा? How we can evaluate it? 1. Customer satisfaction, employee turnover rate, efficiency of cost saving initiatives, and social media engagement. And the answer is, again, it is C. That is efficiency of cost saving initiatives. Is it okay? And question number 8 now. In cost sheet, how are overhead costs usually allocated to product? Overhead cost को किस तरीके से हम allocate करते हैं products में? 1. Based on the number of units produced, overhead cost को randomly assigned to different products, equally distributed among all products, or based on machine hours or labor hours. And the option for the question number 8 is, it is based on machine hours and labor hours. So this is just an idea I've given you about the multiple choice questions. So when are you having your exam of MCQs? Okay. सर आप पेपर में ऐसा क्वेश्चन बड़े आते हैं नहीं आते हैं, अगर नहीं होगा तो आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। हो नहीं सकता ना, करना तो आपने ऐड। सर जो है ऑप्शन वही मिलेगा आपको, ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो नहीं है, नहीं पेपर दो होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट सर, बट जरूरी नहीं है ना। नहीं जैसे आपने 4 ऑप्शन दिया, 2 ऑप्शन आपस में, आई अंडरस्टैंड, तो उसमें से बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बेस्ट। हाँ वो थोड़ा सा उसके लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा सर कंटेंट के अंदर। सो यू हैव टू हैव अ डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट एंड दिस टॉपिक, राइट? Okay, so this is about cost sheet. Okay, छोटा सा, this is a very small topic, right? But definitely you will get a question on cost sheet. All right, now let us learn the process, the format of cost sheet, please. ये cost sheet बनाने का format है. All of you have to make it in your notebook, because after this we will be solving the questions. Okay, you want me to increase the size of it, right? Okay, so you have a particulars column, then you have an amount column, then you have a total cost column, and then you have a cost per unit column, right? So this is the column. आप इसको reverse भी कर सकते हो, पहले cost per unit बना लो, फिर total cost बना लो, फिर total amount बना लो. You can whichever way you want to do it, you can do it. Whichever way you want to do it, you can do it, right? But पहला column particulars column आएगा. Is it okay? The first column is the particulars column. Now in this, the first thing what we have written here is direct material. What we have is direct material. Now in this direct material, what we have to do is opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material. Is it okay? So what we get is raw material consumption. Opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material, what you get is raw material consumption. Is it okay? Or raw material consumed. Now remember one thing in this, let's say for example, there is carriage inward. There is carriage inward. Now carriage inward कब होता है? When जब कोई आप रॉ मटेरियल परचेज कर, एब्सोल्युटली जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो उसके लिए आपको कैरेज पे करना पड़ता है, फ्रेट पे करना पड़ता है.
In case if in the problem you are given carriage inward or freight inward, then add it here. What you will write? Opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material. Whatever the value will come, in that add freight inward or carriage inward. After that you will get raw material consumption. Is it okay? Is it clear? Understood? Okay. Next. All of you have written this? All right. Then add direct wages in it and direct expenses in it. Clear? Now return inward is, carriage inward or freight inward is direct expense. Is it okay? Understood? So what we get is prime cost. जब हम डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तो जो पहली कॉस्ट आती है, दैट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट. That cost is known as prime cost. See, so this is the prime cost. So direct material, direct labor, direct expenses is equal to prime cost. This is the first cost which you have calculated in the cost sheet, right? Now next is, what we are going to do is, we will add factory cost in it. What we will add? Factory cost or factory overheads or work cost और वर्क्स ओवरहेड. प्राइम कॉस्ट में हम ये कॉस्ट ऐड करेंगे, तो जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर होंगे, वी विल ऐड ऑल दोज एक्सपेंसेस इन दिस. क्लियर? सो लेट व्हाट इट सेज, फ्यूल, पावर, वाटर, लाइटिंग, हीटिंग, इनडायरेक्ट मटेरियल, वेजेस फॉर फोरमैन, फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. वी विल ऐड ऑल दीज कंपोनेंट्स, राइट? या ये कह लेते हैं कि so all these are factory overhead. Any expense which against which a factory word is written, before which the factory is written, it has to be added, or all those expenses which are incurred in factory premises or in producing the commodity, right, they need to be added in this. Is it okay? What it says is fuel, power and water, lighting and heating, indirect materials, wages of foreman, factory rent, taxes and insurance, depreciation of on factory, land, building and plant, drawing, office and works expenses, and you have to subtract scrap value and defective works in this, right? So whatever you get in this, what you have to do, you have to add opening work in progress and minus closing work in progress. Understood? आपको इसमें क्या ऐड करना है? Opening work in progress and minus closing work in progress. I just take it down. Okay. So what you get is factory cost or work cost. What you get is factory cost or work cost. Is it clear?
Remember this format, please. Remember this format. Done? Yeah. Is it okay? Is it clear? So हमने पहले क्या निकाला? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वी ऐड, व्हाट वी गेट इज प्राइम कॉस्ट. उस प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करते हैं और माइनस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, सो व्हाट डू वी गेट? फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट. इज इट ओके? नाउ लेट्स मूव फर्दर. Now, in the factory cost, if let us add office and administrative expenses, office and administrative overheads, right? So, all those expenses which company incur in their office, not in factory, in their office, they all are added here. वो सारे एक्सपेंसेस जो ऑफिस में होते हैं वो सारे हम ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर. क्लियर? सो इट सेज ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, राइट, एंड क्लीनिंग, ऑफिस सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस एंड ऑडिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. स्टेशनरी की स्पेलिंग गलत है, रेम्यूनरेशन की स्पेलिंग गलत है, प्लीज. राइट? व्हाट यू गेट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट यू गेट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर? सो वर्क कॉस्ट के अंदर ये सारे एक्सपेंसेस आप ऐड करिए विच आर रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इज इट ओके? नाउ what we got is cost of production. Now in this what you have to do is add opening stock of finished goods and minus closing stock of finished goods. आपको इसमें क्या करना है? जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, राइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. इज इट ओके? राइट? व्हाट यू विल गेट हियर इज cost of goods sold. This is cost of goods sold. I have not mentioned. So this is cost of goods sold. Clear? फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आप ऐड करिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. व्हाट यू विल गेट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्लियर? अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. What are you going to add? Selling and distribution expenses. This is what you are going to add here in your cost of goods sold. Is it okay? Right?
I, okay. Remember this format please for preparing cost sheet. जब cost of goods sold आता है तो उसमें we have to add selling and distribution expenses. बाहर जा रहे हो? जो यहाँ बैठते हैं ना उनको एक मिनट बुलाना प्लीज़. So add selling and distribution expenses in cost of goods sold, right? Now in cost of goods sold, if you add selling and distribution expenses, what you get is cost of sales. So the difference between cost of goods sold and cost of sales is selling and distribution expenses. Cost of goods sold और cost of sales same नहीं होती हैं. Cost of goods sold and cost of sales are not same. The difference between cost of goods sold and cost of sales is selling and distribution expenses. Is it okay? Right? So you will get cost of sales. Now this is the total cost. Cost of sales is the total cost because we have added all direct and indirect expenses in this. What we have done? We have added all direct and indirect expenses. So cost of sales is the total cost which is incurred in producing and selling the commodity. In producing and selling the commodity. Because what we have done, we have added sales and distribution expenses also in this. Right? Clear? Now, if we add profit in cost of sales, अगर हम profit margin add करेंगे, what we are going to get is sales. Is it okay? So the difference between sales and cost of sales is profit. The difference between sales and cost of sales is profit. Now remember, this is the format of cost sheet. I hope all of you have noted down in your answer in your notebook. Right? Now we are going to do problem on cost sheet. We are going to solve some problems on cost sheet now. Right? Clear? So I believe all of you have noted it down. Yeah. बेटा लेकिन आएगा नहीं है ना भाई. Let me just try. अगर होता है तो. This is okay. This is okay. लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर है. मेरे तो हाथ ऐसे ही करते करते ऑन करना ऑफ करते करते यही हो रहा है. Now let us start, right? Let us solve some problems on cost sheet. Okay. थोड़ा बड़ा करूं क्या? Now this is the problem, this is the first problem on cost sheet. This is the first problem on cost sheet. I want all of you to please try this problem now. You have the format and try this problem in your notebook. अगर मैं ज़्यादा जूम करूंगा तो ये नीचे का फिर आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं. अच्छा, ये पूरा प्रॉब्लम है इसका.
This is the whole problem. This is okay. थोड़ा जूम करूं बेटे. ओके ऐसा कर लेते हैं, चलो पार्ट में निकाल देते हैं. यहां तक का ले लो आप. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. This is the first part of the problem, right? You can take a pic of this. Now let me just take it down. And this is the second part of the problem. So 10 minutes to solve the problem, please. But remember, cost sheet, whenever you are making a cost sheet, you have to have a proper format. Just finding the answer will not fetch you 100% marks in the problem, even if your answer is correct. So presentation of information is important. Presentation of the cost component is important. Just writing it down will not fetch you the marks. So the presentation is important. So 10 minutes to solve the problem. You have to make the cost sheet. Make it, I'm just coming in a minute, right? अरे यार इसका भी प्रॉब्लम आ रही है. मेरा तो ये अंगूठा जो है बैटरी गई वो सिंगल. और वो अटेंडेंस शीट दे दीजिए. हाँ सर मैं लेके आ रहा हूँ. Do it fast, please.
Start with opening stock of raw material, add purchase of raw material, minus closing stock of raw material, and see that is there any carriage inward or freight inward. Add it in that. Yeah. स्क्रीन को ना फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं और वो पिन हटा दीजिए तो वो और अच्छा, मैं देख लेता हूँ. इसको अगर मेरे को फुल स्क्रीन करना हो तो कैसे करूँ? नहीं, वर्ड फाइल है. वर्ड वो तो नहीं होता ये फुल स्क्रीन F11 से ये भी नहीं होता. इसको जूम कर सकते हो. जूम होता है ना, जूम तो खैर हो रहा है वो, लेकिन कट रहा है ना. Alt+V करा, हुआ नहीं. अरे और छोटा हो गया है तो. F+F11 दबाना. हाँ, ये भी नहीं सर, ये नहीं होगा फुल स्क्रीन. आप अटेंडेंस शीट दे दो. Anyone who has done it? Anyone who has completed this cost sheet? Done? You should not take it more than 10 minutes.
Okay, let me try for you guys in Excel. Okay, so this is how we should do it. Cost sheet. The format I'm telling you, the cost sheet of this is a company right, for the period. This is how you should write for the period ending. It was 30th June, right, 1993, whatever the time period is, right? Okay, it was 30th June. Okay, just a second. It was 30th June 2022. 30th June 2022. Fine. Okay. Then we have particulars column. Then we have the detail column. Then we have the amount column. Within bracket rupees. Okay. All right. So the first thing in this is we have direct material, but we have to come up with the material. So we are given opening stock of raw material? Opening stock of raw material. How much it is? Opening stock of raw material is 22,000. Right? Then in this, let us add purchase of raw material. Purchase of raw material. How much it is? Purchase of raw material is 1,32,000. 1,32,000. Right? Let me add this. Right? This is the one. Now in this, less closing stock of, कर सकते हैं, वो बाद में भी कर सकते हैं हम, वो बाद में कर लेंगे. Closing stock of raw material. Closing stock of raw material. Right? How much it is? 24,464. 464. Right? Okay. Now in this, what we will do, we will add, let us add carriage inward. Carriage inward. How much it is? Carriage inward is 1584. 1584. So let us find out the value of it, and the value is, this is equal to this plus this. Plus closing stock less नहीं किया. Oh, sorry. Okay. This minus this is this, which is equal to this plus this. So, okay, let me have this value, control C, let me control V. Let me have this value. This is equal to this. So this is your raw material consumption. Raw material consumption. Now in this, do we have direct wages, direct labor? Direct wages. Let us add direct wages in this. Direct wages is 1,10,000. 1,10,000. Right? So if we add these two, right, what we get is prime cost. So this is what you call is prime cost. Prime cost. Clear? So this is the first thing which you have to do. Now in this, what we have to do is we have to add factory overheads. Factory overheads. Right? What all factory overheads we have?
we have rent, rates, insurance and works on cost. Rent, rates, insurance and works on cost. How much it is? 44,000. Right. So let us add these two. Right. So if we add these two, is there any other factory expense? There is a factory supervision is there. Yes, factory supervision is also there. So let us add factory supervision here. Factory supervision. Right. This is 8,000. So let me put it here. This is 44,000. Detailing will come here. 8,800 will come here. Let me total it. So which is equal to this plus this. This is the total of this. Right. What we will get here is, if we add these two, do we have work in progress? Okay. So from this, what we will do, we will add opening work in progress, add opening work in progress. How much is the amount? For opening work in progress, what is the amount? 5280. 5280, right? So if we add these two, and from here let us subtract closing stock of work in progress, right? How much it is? 17,600. 17,600. So if we get whatever value we'll get minus this is what we get is 2,81,600 is what you call is factory cost. This is your factory cost. Clear? Now in this, what we are going to add is add office and administrative expenses or overheads, whatever you feel like, you can write it down. Now in this, what all we have? Do we have any administrative overheads here? Do we have any factory overheads? Oh, office overhead, office and administration overheads in this problem? No, we do not have any, right? So this is 0. Okay? This is 0. And in this, what we are going to do is add opening stock of finished goods. How much it is? Opening stock of finished goods is how much? 17,600. 17,600. If we add it, less closing stock of finished goods. How much is the stock of finished goods? That is 35,200. 35,200, right? Which is equal to this minus this. So this is 2,64,000. What is this? This is cost of goods sold. This is cost of goods sold. Is it okay?
Now from here, what we are going to do is we will add selling and distribution expenses. Now, do we have selling and distribution expenses? What is there? What are these? We are given advertising, discount allowed, and selling cost. This is given to us, and it is 0.75 per ton sold. How many tons the company has sold? 25,600. So which is equal to 0.75 into 25,600. How much it comes to? 19,200. So if we add it, if we add these two, what we get is cost of, this is cost of sales. This is cost of sales, right? And sales is given to us. How much is the sales given to us? 3,30,000. 3,30,000. How much is the profit? Profit is, which is equal to this minus cost of sales. 46,800 is your profit, right? Can anyone find me the cost per unit of goods produced? Can anyone in the class find me the cost per unit of goods produced? Cost per unit of goods produced. We have found all the costs, we have found the profit, but I want all of you to find out cost of manufacturing per unit, cost of production per unit. Anyone in the class? Cost of production per unit. Can anyone find me cost of production per unit in the class? How much? 177 per unit. Okay, let us check. Anyone who can get me another answer. मुझे cost of production per unit चाहिए. आपकी total cost निकल गई. What is the total cost? 2,83,200. 11.0625. Okay, fine. $11.660625. Okay. Okay. कैसे आपका ये पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कॉस्ट निकल गया. अब टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस से डिवाइड करना है. ये तो हाउ मेनी यूनिट द कंपनी हैज सोल्ड? 25,600. ये तो बेची हैं, बनाई कितनी? हाउ मच द कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड? कैसे? You have to find out how many units the company has produced. 25,600 यूनिट तो बेची हैं. क्या उतनी ही बनाई हैं, या उससे ज्यादा बनाई हैं, या उससे कम बनाई हैं? How many unit the company has produced? उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चे, आपको टन्स में ही तो निकालना है. कॉस्ट पर यूनिट पर टन निकालोगे ना, कॉस्ट पर टन. ओके, टोटल टन प्रोड्यूस 1600 ही हुआ है. अकाउंटिंग आती है? अकाउंटिंग, ट्रेडिंग अकाउंट पता है? माल कौन सा बिकेगा, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स का? ग्रेट. सो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओके,
This is my opening stock. How much? 1600 tons. Is it okay? Finished goods 1600 tons. Okay. Sales कितना किया? Sales कितना किया? 25,600 tons बेचा. Closing stock कितना है? 3200 tons is the closing stock of finished good. If I add these two, how much it comes to? 28,800. So कितना units produce किया? Tons produced. Tons produced. How much? If I subtract from this minus opening, how much tons are produced? 27200. ओपनिंग स्टॉक आपका इतना था, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स को ऐड करो, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करो, व्हाट यू विल गेट इज द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन दैट ईयर. ये यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं. टोटल कॉस्ट कितना था आपका? 2,83,200. सो कॉस्ट पर टन इज हाउ मच? कॉस्ट per ton. Cost per ton is equal to this cost divided by, okay, let me put it in this manner, equal to this cost divided by this, right? How much it comes to? 10.41. This is the cost per ton. This is the cost per ton. Total cost divided by number of units, cost per ton produced. Is it okay or not? It is okay. Cost per ton produced. Total cost divided by the number of, divided by the tons produced. Is it okay? Clear? Understood? समझ में आ गया? Right. Okay, this is the second problem. Do it fast, please. I'll give you two problems to try at your home. We will do two problems in the class. One we have already done, one we have to do it now. बाकी दो आप प्रैक्टिस करने के लिए घर पे कर सकते हैं. That's an assignment. You can click a photograph of the same one. This is the first part of the problem. This is the first part of the problem. और इसको अगर आपको छोटा करने को कह रहे हो तो मैं छोटा कर देता हूँ. बड़ा करूं बेटा? ये पूरा आ गया क्या? मेरे यहाँ पे तो पूरा है, आपके यहाँ पे थोड़ा नीचे है. You can add, there is only one thing which is left, that is you have to prepare a statement. पूरा आ गया problem. Please pass on the attendance sheet. Keep passing the attendance sheet, please. Ten minutes to solve the problem, please. You have 10 minutes to solve the problem. Do it fast.
Solve the problem, please. फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में फ़र्क पता है, बस इतना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ डूइंग अ प्रॉब्लम. यहाँ पे सेट पैटर्न नहीं है. मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, बट द मोर यू प्रैक्टिस, लेट मी टेल यू, द मोर यू विल बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम इज डिफरेंट. हर प्रॉब्लम डिफरेंट होता है. पहले प्रॉब्लम और दूसरे प्रॉब्लम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द सेम वे ऑफ डूइंग इट. अंडर ग्रेड लेवल पे इस सब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा यू विल फाइंड अ ट्रिकी क्वेश्चन इन दिस. स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहाँ पे वो सेग्रीगेट नहीं कर पाता कि इसमें ये कॉस्ट कहाँ पे है. अगर एक कॉस्ट भी आपने गलत ले ली, द होल आंसर इज रॉन्ग. स्टेप्स के कोई नंबर नहीं होते सर. अगर आपका कॉस्ट ही कंपोनेंट आपने गलत ले लिया तो आपकी सारी कॉस्ट गलत निकलेंगी. डू इट फास्ट प्लीज. Keep passing the attendance sheet, please, where it is. So opening stock of raw material is 3,000. At purchase of raw material 1,10,000. Keep checking it. So 3,000 plus 1,10,000, 1,13,000. From here, let us subtract closing stock of raw material. That is 4,000. Right? So 1,03,000 plus 1,10,000 minus 4,000. Right? That is 1,09,000. Do we have any direct expense in this? No. We have direct labor. So direct labor is 65,000. Clear?
right? So opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material, right? Whatever we get, that is what we call it raw material consumption. In this, add direct labor. Direct labor is 65,000. So what you will get is the prime cost. What you will get is the prime cost. Where it is not coming. एडिटिंग नहीं हो रहा है. Are you able to do? Do you want me to do it now? So this is the format. Opening stock of raw material is how much? Opening stock of raw material is 3,000, 1,10,000 minus 4,000. 3,000, 1,10,000, and this is 4,000, right? And we don't have any carriage inward in this. What we get is the raw material consumption. The direct wages is 65,000, right? So prime cost is 1,74,000, right?
In this, if we add factory overheads are 60% of direct labor. Factory overheads are 60% of direct labor. So we don't have this. We don't have these two columns, right? So factory overheads are 60% of direct this. So this is 39,000, right? Is it okay? So factory overheads are what? 60% of direct labor. 60% of direct labor. And direct labor means direct wages. Is it okay? So which is 39,000. Okay, so this is 2,13,000. Do we have opening work in progress? Do we have opening work in progress? How much? 4,000. Closing work in progress is 6,000. 4,000 and 6,000. So this is 4,000. This is 6,000. Right? How much it comes to? So our factory cost is 2,11,000. Our factory cost is 2,11,000. Do we have office and administrative expenses? Office and administrative expenses are 5% of sales. 5% of sales. And how much is the sales? 2,75,000. Right? So 5% of sales, which is equal to 0.05 into, let's say sales is 2,75,000 here. 2,75,000. 2,75,000. Right? Okay. Sales is 2,75,000, right? And our office and administrative expenses are 5% of 2,75,000. That is 13,750. So do we have opening stock of finished goods? Yes, and closing stock of finished goods also? Right. So opening stock of finished goods is 7,000, closing stock of finished goods is 8,000, 7,000 and 8,000. Right. So this is 7,000. This is 8,000. Right. So cost of goods sold is 2,23,750. Do we have selling and distribution expenses? Selling expenses are 10% of sales. So this is 10% of sales. Let us forget about this. 10% of sales. So this is equal to 0.10 into sales. This is 27,500. Right? Okay. Our profit is 2,75,000. So our profit is 23,750. 23,750 is your profit. This is your profit. 23,750 and this is also 23,750 if you see this. Is it okay? Clear? Now this is a format. Let me tell you, you have to practice it. I am giving you 2 more problems to solve it. Right? Take a pic of it and try these problems please at your home. Okay, this is the first one. You have to make a cost sheet of this one. You have to make a cost sheet of this one.
नॉन प्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही ऐड होंगे. नॉन प्रोडक्टिव वेजेस जो होते हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर फैक्ट्री कॉस्ट, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट, राइट. डायरेक्ट नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ऐड होंगे नॉन प्रोडक्टिव. सो टेक अ पिक ऑफ दिस. देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम, राइट. Now please try this problem. This is how you will get a problem in maybe in your exam. This is a bit different from the normal one which we have done. This is the problem. You can try this problem, please. पहले वाला दे देता हूँ. You can take a pic of this problem and you can try it. This is a bit different from what we have done. रिमेंबर इन कॉस्ट शीट, अगर एक कॉस्ट भी अगर आपने गलत लिया तो आपका पूरा प्रॉब्लम गलत होगा, पूरा. यू विल नॉट इवन गेट हाफ मार्क ऑन दैट. जस्ट वन मिस्टेक, योर प्रॉब्लम इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. इसको स्क्वीज करूं क्या, साइज छोटा करूं? Okay, what I will do, I will put some case studies also and the different problems on your group, right? And please try to solve them. Those problems will be from marginal costing, standard costing, budget and budgetary control, cost sheet, right? And some other topics also, right? So try to solve as many problems as you can. But remember that every problem is a different problem, so you cannot have the same approach of solving the problem. There could be 1 point or 2 point in that problem which would differentiate that problem from other problems. Is it okay? So you have to practice a lot, right? So this finishes your cost sheet. This finishes your cost sheet. Thank you so much. Attendance sheet, please. You don't have to clap. Yeah, clap. Acha. Very good. I left you guys a bit early. That is the reason you guys are clapping, right? I can understand that. But practice it, please. Attendance sheet. Give me the attendance sheet, please. And all the best for your midterm exam. Do well in your midterm exam, please. मैं आपका नंबर से शेयर करना चाहता हूँ, आप मुझे अगर PDF वगैरह कुछ दे हाँ, 98710. कोई बात नहीं, आराम से कर लीजिए. अटेंडेंस शीट प्लीज. अटेंडेंस शीट प्लीज. सर 9
98710 96140 140 96140। सर मैं हाई करके अजय बोल रहा हूँ, मैं अपना बता दूँगा जो भी मेरा है। आप वहीं को व्हाट्सएप पे हेलो लिख दो ना, अभी SOL आई वट एवर स्टडी मटेरियल आई हैव आई सेंड इट टू यू। 90 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मेरा वो एब्सेंट था। हाय, सर बेसिकली आप पीपीटी शेयर करेंगे अभी कर दूंगा। क्वेश्चन से रिलेटेड। और सर हाँ बता। सर क्या है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में वर्क करता हूँ, ठीक है? तो वहाँ किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ। तो वहाँ पे ना एक मेरे वो है जो प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, वो वहाँ से चेंज कर रहे हैं। तो ही मतलब वो ट्राई कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो आपके प्रोफाइल भेज, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। प्रोफाइल भेज। वी आर लुकिंग फॉर पीपल इन फाइनेंस, दिस एरिया फाइनेंस। फाइनेंस नहीं है सर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप जैसे What I will agriculture do, sector मैं MET में हूँ ना, तो what I will do, I will share his profile with the HR department। उनको MET में जहाँ उनको लगेगा कि ये फिट हो सकते हैं, वो अगर प्रोफाइल अच्छा होगा तो दे विल कॉल। अभी उन्होंने ICAR है रिसर्च जो है उनके अंडर में रिसर्च भी कर रखी है रिलेटेड है, और मेरे साथ ही मिनिस्ट्री में वर्क करते हैं। बट अब ये है कि वो साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि स्टडी से रिलेटेड ही उस चीज़ में आप भेजो, प्रोफाइल भेज देना मेरे को, है ना? ठीक है सर। और वो PPT भी मैं भी भेज दूंगा। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थ्योरी और प्रैक्टिकल का क्या रेशियो है? 40-60, 40 थ्योरी रह सकता है, 60 प्रैक्टिकल। खुश रहो हमेशा, डू वेल इन योर लाइफ। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में क्या प्रोफाइल पे काम करते हो? फाइनेंस असिस्टेंट। अरे वेरी गुड यार, अब ये है कि इसी मंथ मेरा बर्थडे भी एंड ऑफ प्रमोशन हुआ है। अरे वाह, मुबारक हो। तो इसका कोई एग्ज़ाम दिया था टू गेट इनटू दैट मिनिस्ट्री? सर बेसिकली क्या होता है, जैसे यंग प्रोफेशनल के लेवल पे सिलेक्ट होता है ना, अभी नीति आयोग में मैं अप्लाई करूँगा। यंग प्रोफेशनल और ये जैसे EMI और ऐसे होता है ना कि एग्ज़ाम के बिना भी कुछ प्रोफेशनल स्किल्स हैं जिनके पास, तो वो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई करा था। गुड इवनिंग बेटे। हाँ। देन उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट मतलब स्किल टेस्ट हुआ। देन 4 जनों ने इंटरव्यू लिया था, तो मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया था लास्ट ईयर नवंबर में। एंड अब जो है 6-7 मंथ में उन्हें परफॉर्मेंस अच्छी लगी, तो उन्होंने वो चीज़ अपग्रेड कर दी। बहुत बढ़िया, सर चलो अभी गुड। ये बता दो कि पास कैसे होना है? मैंने इस सेमेस्टर एक ही क्लास नहीं लिया। क्यों नहीं करी? बिजी? ओके, नई नई जॉब प्रेशर। कहाँ पे हो? HDFC बैंक किस में, मतलब किस प्रोफाइल पे? कॉर्पोरेट में वर्चुअल केयर ऑफिसर में। हाँ, वेरी तो गुड। उसकी तो वही चीज़ थी, तो उसकी वजह से एक काम करूँगा मैं, जितना PPT होगा वो मैं भेज देता हूँ, हाँ। PPT से पढ़ लो। और नहीं, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो कि अगर उनको कवर कर लूँ ना मैं तो हो जाए। मार्जिनल कर लो, बजटरी कर लो। रुक जाओ सर, मार्जिनल, बजटरी, बजटरी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्टिंग, और कॉस्ट शीट करो। और क्या करोगे? शुरू थ्योरी पढ़ लो, शुरू की और आखिरी की। थ्योरी में अगर अच्छी हो तो हाँ मीन्स हो जाता लास्ट की एक आध चैप्टर जो है ना वो पढ़ लो, लास्ट और की शुरू के theory। हाँ थ्योरी और मीन्स स्टार्टिंग की थ्योरी, आखिरी की थ्योरी है आपकी बुक के अंदर, वो पढ़ लो। एक प्रोसेस कॉस्टिंग में अभी देखता हूँ, अगर टाइम परमिट करेगा ना, तो आई डो नॉट नो। मटेरियल वगैरह तो पहले दूसरे सर ने करा दिया था आपकी क्लास में ना, मटेरियल लेबर वगैरह करा दिया था। वो जो थे ना, वो तो थियरी तो उन्होंने कवर करा दी हाँ, थी, हाँ, पंकज सर ने। हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ। लेकिन वही टाइम फंस गया ना कि मीन्स जिस टाइम उन्होंने वो चीज़ें करवाई उस टाइम मैं अवेलेबल थी, और जिस टाइम से आपकी जब से क्लासेस स्टार्ट हुई तब से मैं अवेलेबल हूँ। चलो कोई बात नहीं है, ये प्रैक्टिस कर लो बेटा, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करें। अगर कोई इशू आता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी कि सर मैं यहाँ अटक गई हूँ, तो मैं खुद बता दूँ। मीन्स वही है ना, इनका कॉन्सेप्ट ही मतलब बेस ही समझ में नहीं आ रहा कि बेस कहाँ से स्टार्ट करूँ। बेसिक से कर, कुछ नहीं कर। एक बात बताऊँ, MBA क्या है? यहाँ पे जो क्लास के अंदर जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, ऐसा तो है नहीं कि 100% आर कॉमर्स स्टूडेंट, राइट? ऐसा नहीं है।
आर्ट स्टूडेंट भी हैं, साइंस स्टूडेंट भी हैं। तो MBA कॉमर्स की कॉमर्स के हो, MBA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेयर यू फाइंड स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स, सो कैन नॉट एक्सपेक्ट अ पेपर विच इज़ टू बी वेरी वेरी ट्रिकी। अभी अकाउंटिंग का पेपर भी देखा था तो उतना ट्रिकी नहीं था, है ना। अगर आराम से किसी ने डिसेंट तरीके से पढ़ा भी होगा ना तो वो भी आराम से पास कर जाता। अब जिसने कुछ किया ही नहीं है तो एक अलग बात है, राइट। सर एमसीक्यू ज़्यादा हार्ड तो बहुत हार्ड तो नहीं होते नहीं हार्ड, तेरे लिए कहाँ हार्ड है। होगा सर। फर्स्ट में ऐसे आए तो लगभग वैसे ही हो गया ना। हाँ,